हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमएस एक्सेल के कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस। कभी भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे एमएस एक्सेल के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके लिए टॉप 30 एमएस एक्सेल क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, व्हाट इज एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल क्या है? Microsoft Excel is an electronic spreadsheet application that enables users to store, organize, calculate and manipulate the data with formulas. Basically MS Excel क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो यूजर्स को क्या इनेबल करता है? डेटा स्टोर करने में, ऑर्गेनाइज करने में, कैलकुलेट करने में, डेटा मैनिपुलेशन में, फॉर्मूलाज यूज करने में. With the formulas using spreadsheet system broken up by rows and columns. ये पता ही है आपको कि उसमें rows and columns होते हैं. It also provides flexibility to use an external database to do analysis, make reports, etc. thus saving lots of time. तो बेसिकली क्या करता है? टाइम सेव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एमएस एक्सेल, क्योंकि इसमें क्या होता है बेसिकली सारी जितने भी कैलकुलेशन है बहुत ईजिली हो जाती है. डेटा इजीली आप स्टोर कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं और फॉर्मूलाज के यूज़ हो जाता है. तो इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है चीज़ें. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिबन? रिबन क्या होता है? रिबन रेफर्स टू द टॉप मोस्ट एरिया ऑफ द एप्लीकेशन दैट कंटेन्स मेन्यू आइटम्स एंड टूल बार्स अवेलेबल इन एमएस एक्सेल. Ribbon can be shown hidden using Ctrl F1 key. The ribbon runs on the top of the application and is the replacement for the toolbars and menus. The ribbons have various tabs on the top and each tab has its own group of commands. Basically ribbon क्या होता है? जो टॉप मोस्ट एरिया होता है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का. जो एमएस एक्सेल की अगर हम बात करें जो टॉप मोस्ट एरिया उसे क्या कहते हैं? रिबन. उसमें क्या होते हैं? मेन्यू आइटम्स भी होते हैं, टूल बार्स भी अवेलेबल होते हैं. और कैसे आप उसको देख सकते हैं? शो ऑन हिडन जो उसका शॉर्टकट की है दैट इज Ctrl+F1. दैट्स कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. एक्सप्लेन स्प्रेडशीट एंड इट्स बेसिक्स. अब स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट कैन बी कंपेयर्ड टू अ पेपर लेजर शीट. स्प्रेडशीट किस तरीके से होती है? जैसे पेपर लेजर शीट होती है बिल्कुल वैसे ही होती है. इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड देयर इंटरसेक्शन कॉल्ड सेल. बेसिकली स्प्रेडशीट में क्या होता है? बहुत सारे रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं. जहाँ रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पे रोज और कॉलम मीट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहते हैं? सेल. तो उसको क्या कहते हैं? सेल. कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. How many data formats are available in Excel? Name some of them. कितने डेटा फॉर्मेट एक्सेल में अवेलेबल हैं? Name some of them. 11 data formats are available in Microsoft Excel for data storage. कितने हैं टोटल? 11. अगर आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछे जाएँ, आपको कुछ नेम देने हैं तो आप कुछ भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. तो फर्स्ट हम जो दे रहे हैं नंबर. स्टोर्स डेटा एज अ नंबर. क्या स्टोर करता है? डेटा एज अ नंबर. करेंसी stores data in form of currency. Data is stored as dates. Percentage stores number as a percentage. Text formats stores data as a string of text. तो ये बेसिकली कुछ हैं. वैसे कितने डेटा फॉर्मेट्स होते हैं? 11 डेटा फॉर्मेट्स आर देयर इन एमएस एक्सेल फॉर स्टोरिंग द डेटा. कुछ एग्जाम्पल आप कोई भी अगर आपसे पूछे जाए आप कोई भी 3-4 एग्जाम्पल्स वहाँ पे दे सकते हो, कोड कर सकते हो. नेक्स्ट, हाउ कैन यू रैप द टेक्स्ट विद इन अ सेल? रैप टेक्स्ट ऑप्शन आप यूज़ करते हैं. रैप टेक्स्ट तो वो पूछ रहे हैं हाउ कैन यू रैप द टेक्स्ट विद इन अ सेल. कैसे कर सकते हैं? यू मस्ट सेलेक्ट टेक्स्ट यू वांट टू रैप. जो टेक्स्ट आपको रैप करना है पहले उसको सेलेक्ट करें एंड देन क्लिक रैप टेक्स्ट फ्रॉम द होम टैब. कौन से टैब में होता है ये आपको याद करना होगा. जो रैप टेक्स्ट ऑप्शन होता है वो कौन से टैब में होता है? होम टैब में होता है. एंड यू कैन रैप द टेक्स्ट विद इन अ सेल. देखो सबसे पहले क्या करना होगा? द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज सेलेक्ट द सेल या सेलेक्ट द थिंग्स द डेटा दैट यू नीड टू डू रैप टेक्स्ट. फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट इट. आफ्टर दैट you go to the home tab, click on wrap text option in MS Excel
and ultimately you will see that the data is within your cell itself, just as required. Okay. Now question number 6. Explain macros in MS Excel. Macros are used for iterating over a group of tasks. Users can create macros for the customized repetitive functions. Whenever there are repetitive functions, you can use macros and you can give certain instructions to it so that it can be repetitively used. Macros can be either written or recorded dependent upon the user. It totally depends upon the user how macros the user want to use. It can be in a written form, it can be in a recorded form, either form it is. It is basically for repetitive functions and instructions. You can use in a customized way. Next. Question number 7. Is it possible to prevent someone from copying the cell from your worksheet? क्या ये पॉसिबल है टू प्रिवेंट करना, किसी को प्रिवेंट करना कि कॉपी ना करे आपकी वर्कशीट से? यस, द आंसर इज यस, इट इज़ पॉसिबल. It is possible to protect your worksheet from getting copied. You need to go into menu bar, review protect sheet password by entering a password, and you can secure your sheet from getting copied by others. तो आप इस वे से क्या कर सकते हैं, अपनी शीट को बचा सकते हैं. Coming on to next. What are charts in MS Excel? MS Excel में charts क्या होते हैं? To enable graphical presentation of data in Excel, charts are provided. किस लिए? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर देनी होती है कभी भी किसी पर्टिकुलर डेटा को, आप एक ग्राफिकल पिक्टोरियल फॉर्म में आप उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यू कैन रिप्रेजेंट इट थ्रू द चार्ट्स. अ यूजर कैन यूज एनी चार्ट टाइप इंक्लूडिंग कॉलम, बार, लाइन, पाई, स्कैटर, एक्सेट्रा by selecting an option from the insert tabs chart group. तो ये कहाँ पे होता है? इंसर्ट टैब में. यू नीड टू रिमेंबर द स्पेसिफिक टैब, कहाँ पे ये पर्टिकुलर कॉलम या ये पर्टिकुलर ऑप्शन होता है. इफ यू टॉकिंग अबाउट चार्ट्स, तो चार्ट्स का ऑप्शन कहाँ पे होता है? इंसर्ट टैब में, चार्ट्स ग्रुप में. तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट, जैसे कि हम कॉलम, बार, लाइन, पाई, स्कैटर, एक्सेट्रा, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ बेसिकली फॉर graphical presentation of data. Whenever you present the data in a graphical form, you can use charts in MS Excel. Question number 9. How can you sum up the rows and column numbers quickly in the Excel sheet? See, basically what they are asking is sum. Sum means what? How can you sum up the rows and columns? कैसे आप quickly sum up कर पाओगे? By using sum function, you can get the total sum of rows and column in Excel worksheet. So basically, sum function is used for the adding up, the totaling up of it. Question number 10. What does a red triangle at the top right of a cell indicate? Basically, एक red triangle आता है top right, एक top right corner में cell के, तो उसका मतलब क्या होता है? They're asking that. What does it mean? The red triangle indicates that some comment is associated with the cell. However, the mouse over it and you can read the full comment. Whenever you can hover the mouse over it, the full comment can be read. So basically what happens is that particular cell has certain comments. Therefore, it is indicating a red triangle over it. If you move your mouse over it, then you can read the complete comment. Everything can be read. So it indicates what? It indicates the comments. Next question. Question number 11. How can you add a new Excel worksheet? How can you add a new Excel worksheet? कैसे add कर सकते हो आप नई Excel worksheet को? To add a new Excel worksheet, you should insert worksheet tab at the bottom of the screen. कहाँ पे? जो bottom होता है screen का, bottom of the screen में आपको क्या मिलेगा? न्यू वर्कशीट का ऑप्शन होगा, तो यू कैन ईजिली ऐड न्यू वर्कशीट इन द एक्सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज फ्री स्पेस इन MS Excel? फ्री स्पेस क्या होते हैं MS Excel में? टू लॉक एनी रो और कॉलम, फ्री स्पेस इज यूज्ड. द लॉक्ड रो और कॉलम विल बी विजिबल ऑन द स्क्रीन even after we scroll the sheet vertically or horizontally.
See, what happens is whenever you want to log any row or a column, you can use the freeze pane option, and what will happen? Everything will be visible, but when you scroll, you can see certain rows or columns that will be logged and visible on the screen itself only. That won't move. So for that case, you can use the freeze pane option in the MS Excel. Next, question number 13. Difference between count, count A, countif, and count blank in MS Excel. If we talk about count, count is used to count cells containing numbers, dates, etc. Any value stored as number excluding blanks. What does it exclude? It excludes all the blanks. And if we talk about count A or count all, is used to count any cell value containing numbers, text, logical values, etc. Any type of value excluding blanks. If we talk about count blank cells or cells with an empty string. Whenever the cells are having empty string, it counts all that. Count if, count cell matching a certain criteria. Whatever the criteria is given, it does that. Next, question number 14. What is the paste special feature used for? The paste special feature is used to allow you to choose specific formatting option when you paste data. See, what happens is whenever you are pasting the data, there is a special option, paste special feature is there, which allows you to use specific formatting option. There are various formatting options which you can use. So that is what the paste special feature gives you. The options are there, you can choose according to it. Next, how do you find and replace data in MS Excel? See, it's very easy. Very simple question. Find and replace data in MS Excel. What you need to do is press Ctrl H to open find and replace dialog box. You can enter whatever you want to find, that particular data you can enter. If you want to replace something, you can mention that particular data that you want to replace, then click on OK and it will be done. Here it is. Next, what is the difference between a line chart and a scatter plot? क्या difference है एक line chart और scatter plot में? A line chart connects data points with the lines. And what about the scatter plot? A scatter plot displays individual data points. So this is the difference. Here, data points with the lines and individual data points. Next. Question number 17. How do you use the SUMIF and SUMIFS function? So this is another question. How do you use SUMIF and SUMIFS function? SUMIF adds values based on single criteria. If there is only single criteria, so SUMIF will be adding on the value based on the single criteria. But if we talk about SUMIFS, the S is added to it, does the same with the multiple criteria. If only single criteria is there, this will work. If multiple criteria is there, this will work. So it totally depends upon the criteria. Question number 18. What is the purpose of trim function? What is the purpose of trim function? Trim function का main purpose होता क्या है? किस लिए काम आता है? Removes extra spaces from text, leaving only single space between the words. See, what trim does is it removes the extra space from the text and leaves only a single space between the words, not more than that. Next, question number 19. How do you use the count blank function? It counts the number of blank cells in a range. What does it do? It counts the number of blank cells in a range. How many number of blank cells are there present in the range? So that is what it counts. Question number 20. What is the purpose of the PMT function in Excel? PMT function का purpose क्या होता है Excel में? The PMT function calculates the payment for a loan based on a constant interest rate and periodic payments. So basically what happens is whenever you take a loan, you want to calculate any interest rate or periodic payments. So in Excel, it is very easy to calculate it. The PMT function, what it does is it calculates the payment for a loan. How much loan is to be paid along with the interest rate, and the periodic payments is considered. So it is very easy to calculate through the MS Excel. It is advantage of it. Next, question number 21.
What is in question number 21? Explain the significance of round function in Excel. What does the round function in Excel does? The round function rounds a number of specified number of digits. See, if you want to round off any particular number of digits in the MS Excel, so this round function is very much helpful for it. Rounding off the data. That is where it is helped. How can you link data between different worksheets? What the next question is, how can you link data between the different worksheets? Use cell references or create formulas that reference cell in other worksheets. Next, explain the difference between the terms filter and sort in Excel. So basically, what's the difference between filtering and sort in the Excel? Sorting arranges data in a specific order. If you use the function for the sort, what it does, it arranges data in a specific order. एक particular order में वो sort होगा. But if we're talking about filtering, filtering displays only the data that meets specific criteria. See, whatever the criteria will be, the filtering will be used accordingly. How do you use average if or average ifs function? Average if calculates average based on single conditions. See, only if is used, that means single condition. And if you use ifs, does the same thing but with the multiple criteria. So totally it is based on the criteria. If we talk about the single criteria, average if will be done. If we talk about multiple criteria, average ifs. Next, what is the purpose of the subtotal function? Subtotal function का purpose क्या होता है? It calculates a subtotal in a list or database, ignoring other subtotals. Next, explain the importance of max and min function in Excel. Max returns the highest value. It is used to return the highest value among the all data. And what about the minimum function? Min returns the lowest value in a range. Whatever the lowest value be, it will be depicted, and max means the highest value will be depicted in the particular range. That's where it is useful. Question number 27. What is a cell address in Excel? This is a very basic question. Everybody knows what a cell address is. Still, we're going to talk about it. A cell address is used to identify a particular cell on a worksheet. It is denoted by combination of respective column letters and a row number. So basically what it is an intersection of rows and columns. That is what. How is a formula different from a function in Excel? A formula is a statement or equation used in the calculation. The user designs these formulae. These simple or complex formulas always start with an is equals to sign. And if we talk about the function, it is predefined code that performs calculation and is a part of the formula. Next, how do you create a hyperlink in Excel? To create a hyperlink in Excel, select the cell or text you want to hyperlink or use Ctrl+K. Mention the address in the dialog box and then click OK. Last but not the least, question number 30. How can you link a cell to different files and websites on an internet? Yes, we can link a cell or different files and websites on the internet using the hyperlink feature of Excel. So that's it. That's it for today. Good luck. Bye-bye.